Welcome student. Now today we will do the Faraday's laws of electromagnetic induction. In previous two classes I came to the classes but nobody came, so I had to go. Electromagnetic induction. When the magnetic flux through a circuit changes. When a magnetic flux through a circuit is you can say that is changing. An induced EMF is set up in the circuit. The law is based on the experiment whose magnitude is equal to the negative rate of, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, negative rate of change of magnetic flux. This is also known as Newman's law. Minus d phi by dt. If coil has n turns, then we can write E equal to minus n d phi by dt. Because the EMF will be induced in each turn. And if there are n turns, so all the induced EMF have to be added up. इसको आप क्लियर कर लीजिए. तो इस लॉ से आप इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको नोट कर लीजिए. E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी. So you can say that phi is the flux of one turn, and if there are n turns in the coil, the flux induced EMF will be set up in each and every turn. So on adding, we get the total induced EMF as minus n d phi by
माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई एम क्लियरिंग इट। न्यूमन्स लॉ भी इसे बोलते हैं, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इंड्यूस ईएमएफ तो हमने पढ़ लिया, इंड्यूस करंट, नेक्स्ट हेडिंग इज इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज and induced charge. If in a coil of n turns, the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux B d phi by dt, d phi by dt, then we know that induced EMF, induced EMF E in the circuit is minus d phi by dt. Let this equation is okay. तो थोड़ा यहाँ पे हम इसे n भी लिखेंगे, minus n d phi by dt. Let this equation is 1. If the coil be closed, आगे ध्यान दीजिएगा, if the coil be closed, if the coil be closed and the total resistance of its circuit be R, then the induced current induced current in the circuit B I equal to E upon R. So we can write minus 1 by R and d phi by dt and d phi by dt. So we can write minus n by R d phi by dt. एक मिनट, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे स्टूडेंट्स, d phi by dt, that is equation number 2. तो इस फॉर्मूले से आप इंड्यूस करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आपको इंड्यूस ईएमएफ अगर आपने निकाल लिया, तो अगर आप इंड्यूस ईएमएफ को आर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द इंड्यूस करंट। ओके, इसको क्लियर करने जा रहे हैं।
So induced current definitely depends upon the resistance of circuit. Okay, so I'm putting it off. तो हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 2. देखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 that induced current depends upon resistance, whereas induced EMF is independent of resistance. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. द चार्ज flowed through the circuit in time interval dt, in time interval dt be given by q equal to I dt. Now I is E by R dt. अब E की वैल्यू रख देंगे हम minus n d phi by dt into dt. So it will get cancelled. So induced charge can be written as minus n d phi by R, n d phi by R. So induced charge does not depend upon, इसको ध्यान रखने वाली बात है, does not depend upon time interval. Time interval. तो इनिशियली इसी पे भी काफी ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम होते हैं. और सिंपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इसको आप कर लीजिए. तो तीन बातें हो गई, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट एंड व्हाट यू कॉल इट, इंड्यूस चार्ज. ठीक है. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं.
Question number 1. The magnetic flux linked with the coil in Webers is given by the equation phi equal to 3t square plus 4t. आप भी करने की कोशिश करिए साथ साथ, plus 9. Because in coming time मुझे ऐसा अंदाजा है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 70 to 80% ऑब्जेक्टिव होगा. Then the magnitude of induced EMF at t equal to 2 second will be. t equal to 2 second पे हमें induced EMF calculate करना है. There are 4 answers. 2 volt. Second answer 4 volt. Third answer 8 volt. Fourth answer 16 volt. तो देखिए इंड्यूस ईएमएफ होगा मॉडुलस ऑफ माइनस डी फाइव बाय डी टी. तो सबसे पहले हमें मालूम है फाई है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9. तो डी फाइव बाय डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 60 प्लस 4. So at t equal to 2 second, d5 by dt will be 6 into 2 plus 4, 16. So induced EMF will be minus 16. So it is plus 16 volt. Because the magnitude, the negative sign only shows that we have seen in the experiment that induced EMF opposes the change in flux. That is why the negative sign is given over here. तो इसका आंसर आ गया. तो साथ साथ सब टॉपिक लेते जाइए और उसके साथ साथ क्वेश्चंस करते जाइए. I have prepared some 15 मॉडल पेपर्स फॉर यू. इसके कंप्लीट होने के बाद आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे. ओके, तो अब इसको क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सिंपल क्वेश्चंस हैं. A conducting circular loop. A conducting circular loop is placed in uniform magnetic field. .04 Tesla.
with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter, यूनिट ध्यान दीजिएगा, per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. There are 4 answers. 3.2 pi microvolt. Second answer 4.8 pi microvolt. V stands for volt. C 0.8 pi microvolt. D 1.6 pi microvolt. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको नोट करिए. अब देखिए, हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और सेकेंडली हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा होता है. तो कॉइल जो लूप है वो नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड है. तो E इक्वल टू, अब जैसे हम लिखेंगे माइनस एक ही उसमें टर्न है, डी डी टी ऑफ मॉडुलस ऑफ फाई. फाई को हम लिख सकते हैं बी ए. बी बाहर चला जाएगा, डी ए बाय डी टी. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट बी. नाउ एरिया सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का एरिया है पाई आर स्क्वायर. पाई विल गो आउट, पाई बी डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, फिर r का भी करना पड़ेगा, डी आर बाय डी टी. अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. नाउ वी विल टेक सम चेंज ऑफ कलर. वैल्यू को अब हम पुट करते हैं. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला, पाई इंटू 0.04. रेडियस कब निकालना है, जब 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 टू द पावर -2 से. डी आर बाई डी टी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड. तो 2 मिलीमीटर को हम इस लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए नंबर 4 2 8 इंटू 2 16 16 2 32. तो ये हो गया 32 पाई, अब 10 की पावर -2 -3 -5 and it is -7. So we can write 3.2 pi into 10 to the power -6. और 10 to the power -6 को हम लिख सकते हैं 3.2
5 माइक्रो वोल्ट। तो इस तरह से हमारा आंसर ए आ जाता है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हमेशा याद रखो मिलीमीटर पर सेकंड है, तो इस मिलीमीटर पर सेकंड को हमें मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। We'll have to do it. तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लें और आप इसे कैलकुलेट भी कर लें। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसको सेव कर लिया और अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर सिंपल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि फैराडे लॉ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सिंपल होते हैं, तो वो हमें कर लेना चाहिए। A coil having area, simple question, 2 meters square is placed in a magnetic field which changes from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square in an interval of 2 seconds. The EMF induced in the coil will be 4 volt, 3 volt, 1.5 volt, and the fourth answer is 2 volt. पाई को आप लिख सकते हैं B इंटू ए। एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dB अपॉन dt। अब वैल्यू पुट करेंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 4 - 1, टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड, this 2 will get cancelled, so the answer is so simple question, 3 volt.
आंसर क्या आ गया आपका? योर आंसर इज 2 वोल्ट। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, डीबी मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले 1 था, बाद में कितना हो गया? 4 हो गया। तो आंसर आ गया 3 वोल्ट। और एक्चुअली बुक्स में आप देखेंगे तो वो एक्चुअली ये माइनस साइन दिया जाता है। तो ठीक है, मॉडुलस हमने ले लिया। मॉडुलस मीन्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, द वैल्यू इज पॉजिटिव। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। 5-6 क्वेश्चन हमें करने हैं बस, फिर हम लेंस ड्रॉ पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा सा वैरायटी आ जाएगा आपको। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। टाइम इंटरवल भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगुलर कॉइल, ध्यान दीजिएगा, ऑफ 20 टर्न्स एंड area of cross section 25 square centimeter is resistance of 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at the rate of 1000 Tesla per second. The current in the coil is one ampere, 50 ampere, 0.5 ampere. Fourth answer 5 ampere. तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो गिवन है। या नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है? 20 टर्न्स। कितने टर्न्स गिवन है? 20 टर्न्स। तो E इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, पहली चीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज दिया गया है, एरिया कांस्टेंट है। तो हम इसको, क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है,
इसलिए हम इसको लिख सकते हैं B इंटू ए। तो स्टेप देखिए, एरिया विल कम आउट dB बाय dt। dB बाय dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स पुट करते हैं 20, एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में बदलिए, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करिए। dB बाई dt 1000। तो मेरे ख्याल से हमारा आंसर आना चाहिए। ये हो गया 500 इंटू 10 टू द पावर -1, क्योंकि ये 10 की पावर 3 है। अब 500 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। पर हमें चाहिए करंट। क्या चाहिए? करंट। तो करंट को तो स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। अब करंट क्या है? E अपॉन आर। पहले आप E ही निकालिए, 50 डिवाइडेड बाय आर, 100 ओम। सो करंट विल बी 0.5 एम्पियर। सो आंसर इज C। So this is a good question. So if you note it down, you tell me. या आपने इसे नोट कर लिया? अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी करने जा रहे हैं। ओके। 0.5 एम्पियर। तो पहले आप इंड्यूस ईएमएफ ही निकालिए, और यहाँ dV बाई dt का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिड यू नोट इट? डिड यू नोट इट डाउन? तो फिर हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, एक हम इम्पोर्टेंट थ्योरी डेवलप करेंगे। ओके, हैव यू डन दिस? ओके, ठीक है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट थ्योरी। अ कॉइल हैज n टर्न्स। ओके, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इट इज kept normal to a magnetic field if from this position coil is rotated through angle theta. Find the change in magnetic flux. अब देखिए,
ये कॉइल है, ये नॉर्मल रखा हुआ है, नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स हो गया, इनिशियल फ्लक्स हो गया एन बी ए। अब देखिए, दिस इज पोजीशन वन। अब कॉइल को हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब कॉइल को हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। देखिए, इसको तो थोड़ा दूसरे तरीके से हम बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह रहेगी। कॉइल को रोटेट करने से क्या होगा, जो एरिया वेक्टर है वो टर्न हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, ये रहा एरिया वेक्टर। ओके, लुक एट माय हैंड एंड सी द पेन, एरिया वेक्टर। अगर मैं हैंड को रोटेट करूंगा तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, अगर मैं हैंड को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री रोटेट होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने कॉइल को कितने डिग्री रोटेट कर दिया, थीटा डिग्री से। ये एरिया वेक्टर का नया पोजीशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह ही बनी रहेगी। तो फाई टू हो गया एन बी ए कॉस थीटा। तो चेंज डी फाई होगा फाई टू माइनस फाई वन। अब आप एन बी ए कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा माइनस वन। तो इस फॉर्मूले से आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिए। ओके, सो नोट इट डाउन। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, अब इस पर बेस एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। कॉइल हैज एन एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैज एन एरिया ऑफ 0.05 meter square and it has 800 tons. It is placed normal to a magnetic field of strength 4 into 10 to the power minus 5 Tesla.
it is rotated through 90 degree in 0.1 second. The average EMF induced in the coil is 0.46 volt. Third answer 0.026 volt. Fourth answer 0.016 volt. अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इनिशियल फ्लक्स क्या था। अब आप देखिए इनिशियल फ्लक्स था NBA नॉर्मल, फाइनल फ्लक्स NBA cos 90 degree. Cos 90 is 0. So change in flux 0 minus NBA, that is minus NBA. EMF minus d phi by dt, then NBA upon dt. Now n number of turns 800, magnetic field 4 into 10 to the power minus 5, area 0.05. कैलकुलेट करिए आप, और कितने टाइम में इसे बाहर निकाला, 0.1 सेकेंड में। तो सबसे पहले तो हम 3200 32 into 10 to the power 2 minus 5, एक मिनट, 5 into 10 to the power minus 2, और नीचे जो 10 की पावर -1 है, ऊपर आके 10 to the power +1 हो जाएगा। तो आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, एंड सॉल्व करिए और बताइए कौन सा आंसर है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन तो कंसेप्ट थी कि रोटेशन का हम कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उस कंसेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये आ जाना चाहिए हमारा लगभग 0.016 वोल्ट। So our answer is D. तो रोटेशन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। You must know the concept of rotation. अब देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, उस पर भी हम बात करते हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। स्क्वायर लूप ऑफ वायर, साइड लेंथ 10 centimeter is placed at angle of 45 degree with magnetic field. Calculate its flux. तो देखिए, ओके, दिस इज एरिया वेक्टर। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें एक चीज बतानी है आपको। ये लूप के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ना कि एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 माइनस 45, दैट इज थीटा। हो सकता है ये एंगल 30 डिग्री दिया होता तो आप क्या करते? ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया होता तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया। अच्छा, अब एरिया को 10 सेंटीमीटर divided by 100 into 10 centimeter divided by 100, 1 by 100, तो एरिया हो गया हमारा 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फ्लक्स, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ पर आपको, एक मिनट। बी इक्वल टू ले लीजिए 0.1 टेस्ला। ओके, तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस 45। कितना हो गया? बी ए कॉस 45। तो 0.1 एरिया 10 to the power minus 2 cos 45 1 by root 2, तो it is 10 to the power minus 3 into 1 by root 2, 1 by root 2.7 into 10 to the power minus 3 वेबर। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बताया। ये देखिए, लूप 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड लूप के साथ 45 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये नहीं। ये तो आपको 90 में से हमेशा हमें वो एंगल लेना चाहिए जो एरिया वेक्टर क्या करता है, फॉर्म करता है। इसका बड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए। वी शुड बी ऑल केयरफुल अबाउट दिस। ये एंगल हमेशा हमें किससे लेना चाहिए? एरिया वेक्टर से लेना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए।
एक जनरल न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। जनरल न्यूमेरिकल्स क्या है होने चाहिए, इसलिए आपको इसे बता दिया। ये एंगल का आप बड़ा ध्यान रखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिया गया था। इसके साथ दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं गए थे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो इसको क्लियर करते हैं और देखिए, अभी हमें पढ़ना है लेंस लॉ एंड एप्लीकेशन। यहाँ हम इस ऑर्डर में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ। मतलब इससे काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे पूछे जाते हैं मैग्नेट मोशन पर, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी। तो ये हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा, 3 टॉपिक है इसमें। सेल्फ इंडक्शन सिंपल टॉपिक है, और तीसरा हमारा होगा, चैप्टर छोटा है, म्यूचुअल इंडक्शन, और इसके साथ हमें पढ़ना है मोशनल ईएमएफ। दैट्स ऑल, इतना ही सिलेबस है। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एसी। पिछली 2 क्लासेस में मैं आया था क्लास में, बट नोबडी वाज देयर, तो फिर मैंने क्लास को आगे नहीं बढ़ाया। तो इसको एंड करते हैं। और एसी के बाद मॉडर्न फिजिक्स लेंगे, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। एक एक दो दो क्लासेस के चैप्टर हैं। सिलेबस भी वहाँ सबसे ज्यादा रिड्यूस हुआ है। ओके, सो टेक केयर।